Welcome back after the break. You're watching Breakfast Show. The government has set the ball rolling to implement Prime Minister's Independence Day suggestion to do away with interviews in the appointment process for junior posts in central government ministry. Here's a report. भ्रष्टाचार का एक क्षेत्र है नौकरी। गरीब से गरीब व्यक्ति चाहता है कि बेटे को नौकरी मिले, और हमने देखा है जब नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आता है तो वो नौजवान किसी को ढूंढता है कि भाई मेरा रेलवे में इंटरव्यू आया है, टीचर में इंटरव्यू आया है, प्यून का इंटरव्यू आया है, ड्राइवर का इंटरव्यू आया है, कोई सिफारिश के लिए किसके पास जाओ। ये मुझे बीमारी बंद करनी है। मैं आग्रह करता हूं राज्य सरकारों को, मैं आग्रह करता हूं सरकार के मेरे सभी साथियों को कि हम छोटी छोटी नौकरियों से ये इंटरव्यू हो सके उतना जल्द बंद करें। Prime Minister Narendra Modi making an important statement in his Independence Day speech. To take it forward, the government has initiated the process to do away with job interviews and appointments to junior level posts of various central government ministries. The Minister of State in the Prime Minister's office, Dr. Jitendra Singh, said that a communique has been sent to all state governments, state public service commissions and staff selection commission to identify such posts where interviews can be discontinued. समाज के नीचे से नीचे वर्ग के व्यक्ति को भी अवसर मिले, एक समान अवसर मिले। यदि कोई रिटन टेस्ट है तो उसके आधार पर, यदि कोई और क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन उसके विभाग पर, ना कि एक्सट्रेनियस फैक्टर्स बीच में आए कि इंटरव्यू का दुरुपयोग करने के द्वारा। Presiding over a meeting of Principal Secretaries of General Administration or Personnel Department from different states and union territories, Jitendra Singh said that the government will soon identify all those posts, particularly at the junior level like Group 3 and Group 4, where an interview is avoidable, and will stop this practice. The states also gave a report of the measures taken by them in this regard. The practice of not holding interviews for junior level appointments would rule out chances of manipulation and corruption. The appointments would be made on objective criteria. It would lead to appointments based on merit. जो एजेंसीज इसमें रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती हैं, उनको भी लिख करके लिखित रूप में भेज करके कहा गया है कि वो भी अपने इनपुट्स दें, उनका क्या इसमें विचार है वो दें। The minister said that the move of barring such posts where an interview would help in testing special capabilities for a particular assignment, abolition of provision interview would not only be in larger public interest, but would also offer a level playing field even for those candidates who are lacking in resources and belong to the lower socio-economic strata. With Sudhakar Das, DD News.